So starting with the worksheet for atomic structure chapter. Now this question is about bromine and some of its compounds. Now atoms of bromine can be represented by Br79 and the other one is Br89. तो ये दो आपस में क्या है? ये आपस में isotopes हैं. Why? Because both of them have a proton number, as you look on the periodic table, both of them have a proton or atomic number of 35, but they have a different mass. One of them has a mass of 79 and the other has a mass of 81. So state the number of protons, neutrons and electrons in an atom of 79 Br. मतलब अगर मैं यहाँ पे Br79 की बात Br79 having a atomic number of 35. What are the number of protons? 35. And when we talk about an atom की एक बात क्या होती है that the protons are always equal to electron. तो electrons भी आपके पास 35 हो जाएंगे. Neutrons क्या है? Neutrons will be 79 minus 35. 79 minus 35 would give us an answer of 44. Mass minus proton आपके पास क्या देता है? Neutron. What is the name used for atoms of bromine having different number of neutrons? उनको हम कहते हैं isotopes. What do we call them? We call these isotopes. They have the same proton number but different neutron number. Why do all atoms of bromine have the same chemical properties? मैंने आपको बताया था physical और chemical properties के बारे में चीज. Physical properties determines जब आपके पास mass फर्क हो, ठीक है, जब आपके पास mass different तो physical properties change हो जाती. But when do chemical properties change? When there are different number of electrons. Chemical properties depends on the number of electrons. तभी वो डिटरमिन करेगा ये एटम है, ये आयन है, ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, इसकी वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज ऑल व्हाट डिपेंड्स व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन. मास जहां तक बात है ना, मास की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज कैन चेंज. The relative atomic mass of bromine is given in periodic table as 80, but a more accurate value is 79.9. Suggest with a reason which of the atoms Br79 and Br81 exists in greater numbers in a sample of. Obviously, ज़्यादा close कौन सा है? Is 81 closer to 79.9 or is 79 closer to 79.9? Obviously, Br79 is closer to Br79.9. इसीलिए हम लिखेंगे 79. We have Br79 and Br81. हमें 79.9 के करीब कौन सी? Obviously 79 is more closer to 79.9. Hence it is a more accurate value. Hydrogen bromide HBr and sodium bromide NaBr are compounds of bromine. Draw a dot and cross diagram to represent a hydrogen bromide molecule. Dot and cross basically क्या होता है? We'll be doing this in covalent bonding. एक तरफ आपने hydrogen बनाना है, दूसरी तरफ bromine. Now we know that bromine is in group number 7, तो उसके outermost shell में कितने electrons हैं? 7. We'll show 7 electrons. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. तो हम यहाँ पे 1 शो करेंगे और ये आपके पास डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है which shows कि आपने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया आपस में. we'll be doing this in covalent bonding. ये आपका बेसिकली covalent bonding चैप्टर में हमने पढ़ना है. Explain how the atoms are held together in a hydrogen bromide molecule. We can say here they have shared 2 electrons, या आप ये भी कह सकते हैं they have shared 1 pair of electron. 1 pair of electron or 2 electrons means the same thing. अगर आपने 1 pair of electrons लिखना है या 2 electrons लिखने हैं, बात वही हो जाती है. Explain why sodium bromide has a higher melting point than hydrogen bromide.
ये क्या वजह हो सकती है बेसिकली? वेल आई टोल्ड यू दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोडियम ब्रोमाइड है NaBr हैज आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल है, जबकि HBr हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग। The answer can be that ionic bonding is more stronger, hence more energy needed to overcome those. यही रीजन थे ना मेरी स्लाइड्स में, more energy is needed to overcome those bonds या forces, hence high BP and MP. A compound has the percentage composition of 13.8, 47.9 and 38.3 oxygen by mass. Calculate its empirical formula. Now I'll be telling you how to calculate a thing known as empirical formula. Basically क्या होता है? You are given some types of atom. कौन कौन सा दिया हुआ है? Sodium. Then you are also given bromine. And you are also given oxygen. सोडियम की परसेंटेज क्या दी हुई है आपको? 13.8. ब्रोमीन की क्या दी हुई है? 47.9. और ऑक्सीजन की क्या है? 38.3. Now you have to divide all these percentages by their masses. सोडियम का mass क्या होता है? 23. ब्रोमीन का mass क्या होता है? 79.9. ऑक्सीजन का mass क्या था? 16. When you are going to divide all of these, इन सब के आंसर्स आपके पास आ जाएंगे डेसिमल्स में। एक आ जाएगा आपके पास 0.6. 49.9 divided by 79.9 would give you again 0.6, and 38.3 divided by 16 would give you 2.4. Now you have to divide all of these answers by the smallest number. सबको 0.6 से divide कर, by the smallest number. Smallest number यहाँ पे 0.6 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. 0.6 divided by 0.6 1. 2.4 divided by 0.6 आपके पास आएगा 4. अब आपने क्या करना है? राइट ऑल दीज एलिमेंट्स नाउ. Na के साथ आ जाएगा 1, Br के साथ आ जाएगा 1 और O के साथ आ जाएगा 4. So the empirical formula is NaBrO4. This is how you calculate the empirical formula of an atom, and this would be your answer.